गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। डे 23 में आप सबका स्वागत है। तो कल तक हमने सिम्टम्स ऑफ सोरा डेवलप पार्ट के जो सिम्टम्स है वो रीड करना चालू हुआ और उसमें हमने वर्टाइगो और हेडेक के सिम्टम पढ़े। तो आज अपनी जर्नी को और आगे बढ़ाते हुए आज के दिन का पार्ट हम शुरू करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। Roaring noise in the brain, singing, buzzing, humming, thundering, etc. The scalp full of dandruff, with or without itching. Eruption on the head, tinea capitis, malignant tinea, with crusts of greater or less thickness, with sensitive stitches, which one of the places becomes moist. When it becomes moist, a violent itching, and the wall crown of the head painfully sensitive to the open air, with it hard swellings of the glands in the neck. The hair of the head as if parched, the hair of the head frequently falls out, most in front, on the crown and top of the head. Bald spots यानी कि alopecia or beginning baldness of certain spots like male pattern baldness is also a secondary symptom of psora. Under the skin are formed painful lumps which come and pass away like bumps and round tumors, which also in rare cases pass over into suppuration like it is a one type of lipoma or it is some nodular swellings. Swelling of contraction in the skin of the scalp and the face. Paleness of the face during the first sleep with blue rings around the eyes. यानी कि Hippocratic face. Frequent redness of the face and heat. He at times also becomes quite weak and weary from it or anxious, and he perspires on the upper part of the body. His body at times become dim, everything becomes black before his eyes, his mind is sad, his head also feels as if too full with burning in the temples. Yellowish, yellow color of the face, shallow yellowish complexion, erysipelas on the face in some cases with much fever, also at times with burning, itching, stinging, watery blisters in the face, which turn into scabs, erysipelas bullosum. Pressive pain on the eyes, especially late in the evening, he must shut them. He cannot look long at anything, else everything flickers before him. Objects seem to move. Flickering vision. इसको कहते हैं flickering vision. That is happening in the pathology of ciliary muscles and pupils. The eyelids, especially in the morning, as if closed, he cannot open them for minutes, yeah, even for hours. For minutes, even for hours, he cannot open them. The eyelids are heavy, as if paralyzed or convulsively closed. पर ये eyelid के muscles की बात कर रहे हैं. The eyes are most sensitive, even paralyzed भी ये इसका ही पार्ट है. जैसे टॉसिस या फिर बेल्स पाल्सी ये सोरा का है डेवलपमेंट का पार्ट. द आईज आर मोस्ट सेंसिटिव टू डे लाइट. Eyes are most sensitive to daylight. They are pained by it and close involuntarily, usually with more or less inflammation. Sensation of cold in the eyes. The canthi are full of pus like mucus, eye gum. Blepharitis जैसा है. The edges of the eyelids full of dry mucus.
edges of the eyelids full of dry mucus. On the edges of the eyelids, inflammation of single meibomian glands or several of them, inflammation of the eyes of various kinds. Fistula lacrimalis has probably never any other cause than the itch disease. Yellowness around the eyes, yellowness of the white of an egg, gray color of the white of an egg, dim opaque spots on the cornea, even without having had any previous inflammation of the eyes. Dropsy of the eye, obscuration of the crystalline lens, cataract. Cataract is always a descendant of Psora. Squinting, squint. If any person has a squint, then that person is affected with Psora, developed Psora. Farsightedness. Farsightedness means hypermetropia is a descendant of Psora. Farsightedness, he sees far in the distance but cannot clearly distinguish small objects held close. Short-sightedness, he can see even small objects by holding them close to the eyes, that is myopia. But the more distant the object is, the more indistinct it appears. At a great distance, he does not see it. False vision, he sees objects double or manifold or only the one half of the them. Hemiopia, डायोपिया डाइप्लोपिया ये सब सोरा के डिसेंडेंट है। या फिर उसमें कोई पार्ट जैसे स्कॉटोमा में होता है तो उसमें सेंट्रल पार्ट नहीं दिखता, बाकी का दिखता है। कोई ऐसा पैथोलॉजी जिसमें टनल विजन हो, जैसे सेंट्रल ही दिखता है, दूसरा नहीं दिखता, तो ये सब सोरा की डिसेंडेंट है। द आईज सीम टू लुक थ्रू अ वेल और अ मिस्ट, ऐसा लगता है कि कोई वेल में से या फिर धुंधलेपन में से वो दिखता है। द साइट becomes dim at certain times, क्या कभी कभी ये dim हो जाती है विजन। Night blindness, he sees well in the daytime but in the twilight he cannot see at all. Blindness by day, he can only see well during the twilight. Amaurosis, uninterrupted dimness of vision, more frequently without opacity of the crystalline lens than with it, increased finally even to blindness. Painfulness of various spots in the face, the cheeks, the cheekbones, the lower jaw, etc., when touched while chewing, as if festering inwardly, also like stitches and jerks, especially in chewing. There are jerks, stitches, and a tension so that he cannot eat. During chewing or speaking, there is at times also similar twitching of the side on the sides of the head where protuberance like painful bumps often arise when the pain is still more unbearable and at times combined with a burning pain. It is called Fothergill's pain in the face. The hearing is excessively irritated and sensitive. She cannot bear to hear a bell ring without trembling. He is thrown into convulsions by the beating of the drum, etc. Many sounds cause pains in the ear. There are stitches in the ear outwardly, especially while walking in the open air. Traveling sensation as itching in the ear, dryness in the ear, dry scabs within, without any earwax, running from the ear of thin, usually ill-smelling pus, pulsation in the ear, various sounds and noises in the ear, such as clicking, rushing, sheathing, roaring, humming, chirping, ringing, drumming, thundering, wheezing, fluttering, murmuring, etc. किसी भी तरीके का टिनिटस हो तो वो सब सोरा की डिसेंडेंट है। कान में पल्सेशन आना सोरा की डिसेंडेंट है। डेफनेस ऑफ वेरियस डिग्रीज इवन अप टू द टोटल डेफनेस विथ और विदाउट नॉइस इन द ईयर, चाहे वो टिनिटस के साथ हो या बिना टिनिटस से हो, कोई भी किसी भी तरीके की डेफनेस, कोई भी डिग्री की डेफनेस इज अ डिसेंडेंट ऑफ सोरा, सोरा का पार्ट है, डेवलप सोरा का पार्ट है। Occasionally worse according to the weather.
Swelling of the parotid glands, often with stinging pains in the glands. Parotid gland की swelling. Epistaxis more or less profusely, more or less frequently, nostrils as it were stopped up. जैसे congested nostril, नाक बंद हो जाना, ये ये सूरा का पार्ट है, डेवलप सूरा का सिम्टम है, either one or both, or alternately first one then the other. Often there is only the sensation of being stopped up, while the air can be freely drawn in through it. Sensation of dryness in the nose, troublesome even when the air passes freely. Polypi of the nose, usually with the loss of power of smelling. These may extend also through the nasal passages into the fauces. Sense of smell weak, lost. तो स्मेल नहीं आना, जैसे कोरोना में था कि स्मेल नहीं आती थी, तो वो सूरा का सिम्टम है, डेवलप सूरा का सिम्टम है, यानी कि जो कोरोना था वो डेवलप सूरा का पार्ट था. Sense of smell perverted, smell of manure or some other peculiar smell is in nose. किसी भी तरीके की अलग तरीके की स्मेल आना, जैसे burnt smell, तो ये परवर्जन है. ये सब कोई किसी भी तरीके का परवर्जन का स्मेल, ये सब सूरा की डिसेंडेंट है. तो चाहे कोई भी डिजीज डायग्नोसिस हो, लेकिन अगर पेशेंट में अगर ये सिम्टम है तो डायग्नोसिस, जो डायग्नोस्टिक टर्मिनोलॉजी आई है वो सब सूरा के डिजीज का पार्ट है. द वायलेंट सेंसेशन ऑफ स्मेल, हायर एंड हाईएस्ट सेंसिटिवनेस फॉर इवन इम्परसेप्टिबल ऑर्डर्स. एक्यूट स्मेल भी सूरा का पार्ट है. स्कैब्स इन द नोज, discharge of pus or hardened clots of mucus, sometimes also discharge of acrid mucus from the nose. हमें ये सब नहीं ठीक करना है. हनुमान सर ने कल ये पहले बता दिया है कि भाई होम्योपैथ, एक सच्चा होम्योपैथ प्राइमरी सिम्टम या उसके सेकेंडरी सिम्टम को ट्रीट नहीं करेगा, वो सिर्फ सूरा को ट्रीट करेगा. Fetid smell in the nose, nostrils frequently ulcerated, surrounded with pimples and scabs, swelling and redness of the nose or tip of the nose, frequent or continual, under the nose or on the upper lip, long lasting scabs or itching pimples. The red of the lips is quite pale. जब भी ऐसा होता था तो पहले एक हम सिम्टम लेते थे कि रेडनेस ऑफ द पार्ट्स यूजुअली, सॉरी, पेलनेस ऑफ द पार्ट्स यूजुअली रेड. तो ये सिम्टम हम उठाते थे, लेकिन ये ओनली ये डिजीज सिम्टम हो जाता है तो डेवलप सूरा को बयान करता है. हमें ऐसे सिम्टम नहीं उठाने इस तरीके से. The red of the lips is dry, scabby, peeling of it chaps, swelling of the lips, usually of the upper lip, at times with a burning, biting pain. Inside of the lips is lined with little sores or blisters, often very painful, coming and passing away. Cutaneous eruption of the beard and of the roots of the hair of the beard with itching, eruptions of the face of innumerable kinds, milk crust, pimples, blotches, herpes, and carcinomatous ulcers of the nose, lips, and face, with burning and stinging pain, glands of the lower jaw swollen, sometimes passing over into chronic suppuration. Glandular swellings down the sides of the neck means अब ये फेरिंजियल, जो भी नेक की ग्लैंड की पैथोलॉजी होती है उन सब के सिम्टम्स है, जैसे जैसे ट्यूबरक्युलर लिम्फेडेनाइटिस या फिर किसी भी तरीके की ग्लैंडुलर एनलार्जमेंट, जैसे पिट्यूटरी पैरोटिड एडिनोमा या फिर कोई सलाइवरी ग्लैंड ट्यूमर, तो ये सब सोरा की डिसेंडेंट है. या फिर गोइटर या फिर सिस्ट इन द थायराइड, ये सब सोरा का पार्ट. Gums bleeding at a slight touch, gums bleeding at a slight touch, gums the external or the internal, painful as if from wounds, gums with erosive itching, gums whitish swollen, painful on touching, gums recession, leaving the front teeth and their roots
bear. किसी भी तरीके की गम की पैथोलॉजी, gnashing of the teeth during sleep, यानी कि grinding, worm infestation is a descendant of Psora. Looseness of the teeth and many kinds of deterioration of the teeth even without toothache. बिना toothache अगर कोई दांत हिलता हो तो वो Psora का पार्ट है. Toothache of innumerable varieties with varying causes of excitation. She cannot remain in bed at night owing to toothache. On the tongue, painful blisters and sore places, tongue white, coated white, or fused white, tongue pale bluish white, tongue full of deep furrows here and there, as if torn above, tongue dry. Sensation of dryness on the tongue, even while it is properly moist. Stuttering, stammering, also at times sudden attacks of inability to speak. On the inside of the cheeks, painful blisters or sores. Flow of blood from the mouth, often severe. Sensation of dryness of the wall internal mouth or merely in spots or deep down in the throat, chiefly on waking up at night or in the morning with or without thirst, with a great deal of dryness in the throat, often a pricking pain in swallowing. तो अगर आपको एक्यूट में ऐसे सिम्टम मिलते हैं तो आपको वहां पर समझ जाना है कि ये डेवलप सोरा का पार्ट है, तो वहां पर आपको एंटीसोरिक दवाई देनी एक्यूट में भी. तो माय डियर फ्रेंड्स, आप इसका ख्याल रखें. जैसे ही आपको ऐसे सिम्टम एक्यूट में मिलते हैं तो आपको इसको एंटीसोरिक से ट्रीट करना है. जैसा हनुमान सर ने ऑर्गेनोन में लिखा है कि एक्यूट में भी आपको एंटीसोरिक देनी पड़ेगी जब वो एक्यूट दवाइयों से सही नहीं होगा. लेकिन उससे पहले हम इसको समझ सकते हैं कि जब भी आपके पेशेंट में अगर इसमें से कोई सिम्टम मिलता है एक्यूट में, तो आपको वहां पर एक्यूट से कोई टाइम बिगाड़ने की जरूरत नहीं है. आपको सीधा सीधा एंटीसोरिक देना है. Fetid smell from the mouth, burning in the throat, constant flow of saliva, especially while speaking, particularly in the morning, continual spitting of saliva, frequent mucus deep down in the throat, the fauces, which he has to walk up, and expectorate frequently during the day, especially in the morning, frequently inflammation of the throat and swelling of the parts used in swallowing, insipid, slimy taste in the mouth, intolerably sweet taste in the mouth, almost constantly bitter taste in the mouth, mostly in the morning, not rarely, this is constant. Showerish and sour taste in the mouth, especially after eating, through the food, tasted all right, rarely and offensively sweet taste in the mouth, even without eating or drinking, putrid and fetid taste in the mouth, bad smell in the mouth, sometimes moldy, sometimes putrid, like old cheese, किसी भी तरीके का पायोरिया, like fetid foot sweat or even rotten sauerkraut. ये सब पायोरिया ये सोरा का डिसेंडेंट है. Eructations with the taste of food several hours after eating. Eructations empty, loud, of mere air, uncontrollable, often for hours, not infrequently at night. और किसी भी तरीके की इरक्टेशंस लाउड या उसमें टेस्ट आता हो, कोई किसी भी तरीके का इरक्टेशंस हो, इनकम्प्लीट इरक्टेशंस which causes merely convulsive shocks in the fauces without coming out of the mouth. इनकम्प्लीट इरेक्टेशन जिससे जिससे फोसिस में स्पाजम आ जाए. इरेक्टेशन शावर either fasting or after food, especially after meal. Eructation which excites to vomiting. Eructation rancid, especially after eating fat things. Eructations putrid or moldy early in the morning. Frequent eructations before meals, खाने से पहले, with a short of rabid hunger, और उसके साथ साथ increased hunger होगी, यानी कि उसको भूख बहुत ज्यादा लगेगी.
heartburn more or less frequent, acidity, there is burning along the chest, पूरे छाती में जलन होना, especially after breakfast or while moving the body. वाटर ब्रश यानी कि वाटर ब्रश मीन्स जैसे गले में पानी आ जाए. The water brush, a gushing discharge of a shot of salivary fluid from the stomach. Stomach में से पानी ऊपर चढ़ जाना. Preceded by writhing pains in the stomach. और उसके बाद stomach या pancreas में pain होना. With a sensation of weakness, shakiness. Nausea causing as if where a swoon. Nausea के साथ साथ उसमें swoon यानी vertigo. And gathering of the saliva in the mouth even at night. ये तो एक पूरा पिक्चर है. This is also at times turns into vomiting of water, mucus, or a gush of acrid acid, more frequently after eating flour dumpling. Flour dumplings, flour dumplings means ये जो गुजराती लोग जो वो खाते हैं ना पापड़ी नो लोट, वो फ्लोर डम्पलिंग है. उसके खाने के बाद अगर ऐसा हो वॉमिटिंग ऑफ वाटर ब्रश या वॉमिटिंग ऑफ एक्रिड एसिड, तो ये सोरा का पार्ट है. वेजिटेबल्स कोजिंग फ्लैचुलेंस, ऐसे वेजिटेबल्स खाने के बाद जिससे फ्लैचुलेंस हो, जैसे पोटैटोज, तो ये सब उससे नहीं होता. ये सोरा का पार्ट है, डेवलप सोरा का पार्ट है. बैक्ड प्रोन्स एटसेट्रा, तो लोग आके बोलते हैं कि सर ये ऐसा खाया है जिससे गैस हो, तो उसकी वजह से ये सब हुआ है. फ्राइड फूड खाने से लोग बोलते हैं कि गैस हो जाता है, एसिडिटी होती है, लेकिन ऐसा नहीं है. वो सिर्फ एक हवा देने का काम करता है, एक्साइट करने का काम करता है, स्टिमुलेशन देता है. लेकिन इंफॉर्मेशन सोरा की है, सोरा अंदर है, इसीलिए तो ये सब चीजें उसको इफेक्ट दे रही. The ruling complaints in any part of the body are excited after eating fresh fruit, especially especially if this is aciduous, also after acetic acid, in salads, etc. तो ये सलाद खाने के बाद बॉडी में कुछ ऐसी तकलीफ होना, फ्रेश फ्रूट खाने के बाद, तो वो एक एसिडिक पार्ट उसको एक्साइट कर रहा है. लेकिन प्रॉब्लम है सोरा. सोरा नहीं होता तो उससे इसको कुछ नहीं होता. नोजिया अर्ली इन द मॉर्निंग, ऑफन कमिंग वेरी सडनली. नोजिया इवन टू वॉमिटिंग in the morning immediately after rising from food, decreasing from motion. Nausea always after eating fatty food, fatty things or milk, vomiting of blood, hiccup after eating or drinking, swallowing preceded by spasms, even causing a man to die of hunger, spasmodic involuntary swallowing, frequent sensation of fasting and of emptiness in the stomach or abdomen, not unfrequently with much saliva in the morning, ravenous hunger, canine hunger, especially early in the morning. He has to eat at once, else he grow faint, exhausted and shaky, or if he is in the open air, he has to lie straight down. Ravenous hunger with rumbling and grumbling in the abdomen. Appetite without hunger, he has a desire to swallow down in haste various things without there being any craving, therefore, in the stomach. A short of hunger, but when she then eats ever so little, she feels at once satiated and full. When she wants to eat, she feels full in the chest, and her throat feels as if full of mucus. Want of appetite, only a short of gnawing, turning, and writhing in the stomach urges her to eat. Repugnance to cooked warm food, especially to boiled meat, and hardly any longing for anything but rye bread with butter or for potatoes. किसी भी तरीके के खाने से अगर नौसिया वॉमिटिंग हो, खाना पसंद नहीं आए,
यानी कि लॉथिंग ऑफ फूड, वांटिंग ऑफ एपेटाइट, ये सब कुछ सूरा का डिसेंडेंट है। डेवलप सूरा के पार्ट को बयान कर रहा है, दिखा रहा है कि अंदर से सूरा डेवलप हो गया। इन द मॉर्निंग एट वंस, थर्स्ट, कांस्टेंट थर्स्ट, सुबह में कांस्टेंट थर्स्ट होना। इन द पीट ऑफ स्टमक देयर इज सेंसेशन ऑफ स्वेलिंग पेनफुल टू द टच, sensation of coldness in the pit of the stomach, pressure in the stomach or in the pit of the stomach, as from a stone or a constricting pain, cramp, in some cases, even while fasting and causing him to wake up out of sleep at night, sometimes oppressing the breathing. तो इतना दर्द होना स्टमक में कि कभी कभी ब्रीथिंग भी ऑपरेस्ट हो जाए, ब्रीथिंग में भी प्रेशर आने लगे। In the stomach, beating and pulsation even when fasting, spasm in the stomach, pain in the pit of the stomach as if drawn together. तो कभी कभी लोग बोलते हैं कि पेट में स्पाजम आ रहा है क्योंकि भूख लग रही है। तो ये भूख लगे तो पेट में स्पाजम या कुछ होना नहीं चाहिए। वो वो सोरा का पार्ट को दिखा रहा है। Gripping in the stomach, a painful gripping in the stomach. Not infrequently means frequently with vomiting of mucus and water, उसके साथ साथ vomiting होना gripping के साथ, without which without which in such a case the gripping is not alleviated, और vomiting के बिना पेट का दर्द जिसमें ऐसा लगता है किसी ने पकड़ लिया है, gripping यानी पकड़ लेना, तो किसी ने पकड़ लिया ऐसा सेंसेशन आता है, वो बिना वॉमिटिंग से हटता नहीं है, इसलिए वॉमिटिंग हो जाती है। It suddenly constricts the stomach, especially after cold drinking. Pain in the stomach as if sore when eating even the most harmless kinds of foods. Pain in the stomach as if sore when eating even the most harmless kinds of food. कितना सादा भी पेशेंट आके बोलते कि सर मैं ऐसा कभी भी ऐसा तीखा तेल वाला नहीं खाता, मसाले वाला नहीं खाता, फिर भी मुझे पेट में दर्द हो जाता है या फिर एसिडिटी हो जाती है। प्रेशर इन द स्टमक, ये सब सोरा का पार्ट है, डेवलप सोरा का। हमें इस पार्ट को नहीं सही करना है, हमें सोरा को सही करना है, तो उसका डेवलप पार्ट के सिम्टम ऑटोमेटिकली सही हो जाएंगे। Pressure in the stomach even when fasting, but more from every kind of food. जब भी फास्ट करते तब प्रेशर होना या फिर किसी भी तरीके के खाने से स्टमक में प्रेशर आना, और फ्रॉम पर्टिकुलर डिशेज, फ्रूट, ग्रीन वेजिटेबल्स, ड्राई ब्रेड, फूड कंटेनिंग विनेगर एक्सेट्रा, किसी भी तरीके की पर्टिकुलर खाने की डिश से भी, अगर खाने की जो भी आइटम है उससे अगर पेशेंट को तकलीफ हो रही है तो फिर वो सोरा में है। इवन आफ्टर partaking ऑफ द स्लाइटेस्ट क्वांटिटी ऑफ सच थिंग्स, अगर भूल से भी उसने थोड़ा सा भी खा लिया, देयर में ऑल्सो ensue colic pain or numbness of the jaws, tearing pain in the teeth, copious accumulation of mucus in the throat etc. किसी भी तरीके के सिम्टम उत्पन्न हो सकते हैं, थोड़ा सा भी इसको वो करे तो, थोड़ी सी भी क्वांटिटी हो तो भी उससे कॉलिक पेन या नमनेस ऑफ द जो चालू हो सकता है, टीयरिंग पेन इन द टीथ हो सकता है, कॉपियस एक्यूमुलेशन ऑफ म्यूकस इन द थ्रोट ऐसा हो सकता है। तो ये सब कुछ क्या दिखा रहा है, उसको ये खाना नहीं है और उसको जबरदस्ती खिलाया, यानी कि लाइफ में कोई ऐसी घटना घटी जिसमें जिसमें उसको ये घटना से पसार नहीं होना था, ये मॉर्सल अंदर लेना नहीं था और उसको जबरदस्ती दिया गया। तो जौ में क्या आ गया, नमनेस, ताकि वो हिले डुले ना, पेन होने लगा जौ में, या फिर टीथ में टीयरिंग पेन आया ताकि वो उसको चबा ना पाए और बाहर निकाल दे। कॉपियस एक्यूमुलेशन ऑफ म्यूकस इन द थ्रोट, थ्रोट में इतना म्यूकस क्यों आ गया, ताकि वो इसको बाहर ना, इसको अंदर ना डाल सके, या फिर इसको इस ऐसे जो पेनफुल घटनाएं है उसको इजी तरीके से निगल जाए, क्योंकि अब तो निगलना ही है, क्योंकि जबरदस्ती ऐसी घटनाओं में फंस गया।
तो निगलने के लिए ये ऐसा मॉर्सल है जिसको निगल नहीं पा रहा है, तो उसको निगलने के लिए म्यूकस चाहिए, और इसीलिए थ्रोट में म्यूकस एक्युमुलेशन स्टार्ट हो जाता है सब कुछ साइकोलॉजिकल, लेकिन बॉडी उसको अपने अपने बायोलॉजिकल लेवल पे चेंज होके इसको सॉल्व करने की ट्राई कर रहा है, लेकिन ये ऐसा नहीं होता है। और ये सब हनुमान सर ने बेहतरीन तरीके से समझाया हुआ है कि भाई ये सोरा है जो साइकी में पड़ा हुआ है, और जब तक ये सॉल्व नहीं होगा तब तक चाहे हम बाहर से कितना भी अच्छा कर ले बॉडी को, वो सही नहीं होने वाला है। एक में से दूसरे डिजीज में ट्रांसफर होता रहता है, दूसरे स्वरूपों में अपने अपने कई ऐसे स्वरूप है सोरा के जिसमें से एक या दूसरे स्वरूप में वो ट्रांसफर होता जा रहा है। ड्यूरिंग ईटिंग During eating, feels dizzy and giddy, threatening to fall to one side. After the slightest supper, nocturnal heat in bed, in the morning, constipation and exceeding lassitude. After meals, anxiety and cold perspiration with anxiety. There may also be pains, renewed now and then, that is, stitches in the lips, gripping and digging in the abdomen, pressure in the chest, heaviness in the back and the small of the back, even to nausea, when nothing but an artificially excited vomiting will give relief. तो काफी लोगों को ऐसा होता है कि उतना गैस या घबराहट होती है कि वो जबरदस्ती उसको वॉमिट करते हैं। आर्टिफिशियल एक्साइटेड, मुंह में उंगली डाल के वॉमिट करना, दैट इज आर्टिफिशियली एक्साइटेड वॉमिटिंग, यही एक उसको रिलीफ देता है विथ सम। और ये सिम्टम नक्सोमिका में दिया हुआ है। With some, the anguish is aggravated after eating, even to an impulse to destroy themselves by strangulation. इतना इतना एंग्विश कि वो सुसाइडल में भी जा सकता है। डिस्ट्रॉय देमसेल्व्स बाय स्ट्रैंगुलेशन, अपने आप को वो मारने की कोशिश करता है। तो ये एक सुसाइडल थॉट्स हुआ, यानी कि मेंटल कॉन्कोमिटेंट विथ फिजिकल कंप्लेंट। तो ये ड्यूरिंग ईटिंग पर्सपिरेशन, खाने के टाइम पे बहुत ज्यादा पर्सपिरेशन होना, तो ये भी डेवलप सोरा का पार्ट है। अगर आपके पेशेंट में उसकी पैथोलॉजी सही हो जाए लेकिन ये उसको चालू ही रहे कि खाने के टाइम पे सर बहुत पसीना आता है, तो माय डियर फ्रेंड्स, आप उस पेशेंट को एज अ क्योर फ्री मत करिए। वो अभी भी है, सोरा अभी भी पूरी तरह से हटा नहीं है। आपको उसको और ट्रीटमेंट देनी है, दूसरी नई एंटीसोरिक दवाइयाँ देनी भी पड़ सकती है, लेकिन उस केस को कंटिन्यू करिए। इमीडिएटली आफ्टर ईटिंग वॉमिटिंग, क्योंकि यहाँ पर एक कंसाइंस की बात आती है कि भाई आपको पेशेंट को ठीक करना है या उसकी पैथोलॉजी को ठीक करके फ्री करना है, क्योंकि इन दोनों में अंतर है। पेशेंट को ठीक करना यानी कि उसको संपूर्ण तरीके से हेल्थ प्रदान करना है, उसको एनिहिलेट करना है उसके डिजीज को, उसको क्योरिंग देना है, क्योर देना है। और उसकी सिर्फ पैथोलॉजी को ठीक करना यानी कि उसको बाहर से अच्छा कर देना, जैसे एलोपैथिक सिस्टम करती है। इसलिए काफी काफी बार मैं अपने स्टूडेंट्स या जो भी बच्चे सीखने आते हैं या जो भी मेरे कलीग्स है जो हमारे साथ डिस्कशन होता है, तो मैं हमेशा से ही ऐसी प्रैक्टिस को मैं एलोपैथिक प्रैक्टिस ही कहता हूँ कि ये होम्योपैथिक दवाई तो यूज करते लेकिन प्रैक्टिस कर रहे हैं एलोपैथिक की, क्योंकि ये एलोपैथिक फंडा है जिससे जिसमें पेशेंट की बीमारी को बाहर से अच्छा करना, उसको पूरी तरह से अच्छा नहीं करना, ये एलोपैथिक का फंडा है। अगर आप होम्योपैथिक दवाई से उसी तरीके से इसको यूज करेंगे तो उसको वही प्रैक्टिस की जाएगी, क्योंकि होम्योपैथी के लॉज अलग हैं, वो नेचुरल तरीके से बीमारियों को अच्छा करते हैं। आफ्टर मील्स आफ्टर मील्स pressure and burning in the stomach or in the epigastrium, almost like heartburn. After eating, burning in esophagus from below upward. After meals, distension of abdomen with these, at times weariness in the arms and legs. After meals, very tired and sleepy, often until the patient lies down and sleep.
after meals as if intoxicated, after meals headache, after meals palpitation of the heart, alleviation of several even remote complaints from eating. खाने से काफी सारी तकलीफें अच्छी हो जाए, जैसा एनाकार्डियम में है। एनाकार्डियम में कोई भी तकलीफ हो तो एमिलियरेशन बाय ईटिंग होता है। तो वो ये दर्शाता है कि वो बंदा डेवलप सोरा में है। द फ्लेटस डज नॉट पास बट मूव्स अबाउट। लेकिन जब आप एनाकार्डियम पढ़ेंगे तो आपको लगेगा कि ये किस तरीके की अंडरस्टैंडिंग है, क्योंकि फिजिकल बॉडी क्या दिखा रही है और उसके माइंड क्या दिखा रही है काफी डिफरेंट है, लेकिन उसको कोरिलेट किया जा सकता है हैमर के थ्रू। तो आपको वहां पर डॉक्टर हैमर के अंडरस्टैंडिंग को एप्लीकेशन देना है जब दवाई को आप अंडरस्टैंड कर रहे हो तब। द फ्लेटस डज नॉट पास ऑफ बट मूव्स अबाउट। फ्लेटस पास नहीं होता है लेकिन but moves about causing many ailments of the body and of spirit। लेकिन लोग लोग बोलते हैं कि भाई मुझे मुझे गैस यहाँ पर भर गया है, जैसे पीठ में काफी यू जो आउट ऑफ गुजरात के पेशेंट आते हो तो वो पीछे जब कोई भी स्टिफनेस आ जाए बैक में तो वो बोलते हैं कि सर हवा अटक गई, मतलब कि वहां पर गैस गैस वहां पर स्टक हो गया है। तो ये डिफरेंट टर्मिनोलॉजी है जो जो ये दिखा रही है कि उसको सूरा है, डेवलप सूरा है। एट टाइम्स ग्रोविंग पेन इन द लिम्स, especially in the lower limbs, stitches in the pit of the stomach or in the side of the abdomen। काफी काफी बार आयुर्वेदोलॉजिस्ट भी ये बताते हैं कि आपको गैस की वात की तकलीफ है और उसकी वजह से आपको ये जोड़े का दर्द, उसको वात ही बोलते हैं, वो हो जाता है। तो ये हनुमान सर ने उसको ठीक बताया है यहाँ पर कि भाई ये जब ये गैस की तकलीफ सही नहीं होती है तो वो सप्रेस्ड होके बॉडी या स्पिरिट के डिफरेंट एलिमेंट्स प्रोड्यूस करती है, कोज करती है। Abdomen is distended by flatus. The flatus often ascends. Less frequently, a great quantity of flatus is discharged, especially in the morning, without smell and without alleviating the other ailments. यानी कि flatus does not ameliorate the complaints. In other causes, flatulence with a great quantity of excessively fetid flatus passing on। दूसरे ऐसे केसेस है फ्लैटस के जिसमें जिसमें फिटिड फ्लैटस पासिस होता है ग्रेट क्वांटिटी में। कुछ केसेस ऐसे होंगे जिसमें स्मॉल क्वांटिटी में पास होगा, कुछ केसेस ऐसे होंगे जिसमें लार्ज फ्लैटस पास होता है। द एब्डोमेन फील्स फुल स्पेशली आफ्टर अ मील। खाने के बाद पेट भरा भरा रहता है। Sensation as if the flatus ascended, followed by eruptions, then often a sensation of burning in the throat, or vomiting by day and by night. Pain in the hypochondria often touched and in the motion, or also during the rest. Constricting pain in the epigastrium immediately after the ribs। तो आज के सेशन को हम यहाँ पर स्थगित करते हैं। कल फिर से हम जुड़ेंगे, हमारी इस डेवलप सूरा की जर्नी को और गहराइयों से जानेंगे और काफी सारे तथ्यों के बारे में जानेंगे जिसको हनुमान सर ने डेवलप सूरा में दिया हुआ है। तब तक के लिए थैंक यू, गुड बाय।